सो सी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का बेसिक आइडिया जो है वो ये है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो देयर विल बी सम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। whatever the process be there will be some change, या फिर कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, जहां पर एंट्रोपी चेंज जीरो हो, बट वहां पर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, और दैट्स समथिंग ये सो मतलब देयर आर टू डिफरेंट कंडीशंस जिसको कि स्टेट किया गया है। जनरल स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ये बोलता है कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स always increases during always increase during any process, no matter what process we are doing, increases or increase during any process, or sorry, any spontaneous process, spontaneous, and obviously spontaneous is quite related to irreversible process, that is delta S universe is greater than 0 for spontaneous or process, spontaneous or irreversible process, ठीक है। इसमें सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट में ये है हमारा, मेनी टाइम्स इसको कंबाइन करके ही बोलते हैं, द एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ना, नॉन स्पॉन्टेनियस और रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स remains constant during, hello, join the lecture. The entropy of universe remains constant during reversible process. That is delta S universe will be equal to 0 for reversible process. Now reversible process is something which is non-spontaneous, we can't ascertain that,
It is a subset of spontaneous only which is reversible in nature. ठीक है? Uh, or it is in boundary between spontaneous and non-spontaneous. Non-spontaneous जो होगा उसके लिए एक third part of the statement है reversible process, and thirdly the entropy of universe for universe will be or will decrease for non-spontaneous processes. Okay, entropy of universe will decrease for non-spontaneous processes, or in short, these processes do not, I mean, non-spontaneous processes are not allowed and they do not take place in general. ठीक है? Non-spontaneous processes are not allowed or do not take place in general. क्योंकि entropy of universe is going to decrease and that is not a allowed direction. बेसिकली ऐसा होता है ना कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी डिक्रीज कर ही नहीं सकती है. इट्स लाइक दिस. आगे के स्टेटमेंट जो क्लॉजेस एंड ये स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टेटमेंट का ये भी मतलब आएगा. लेकिन इन शॉर्ट ये होता है कि entropy of universe can never decrease. That means non-spontaneous processes cannot take place. ठीक है. अब दूसरी चीज ये होती है कि हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं. देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस फॉर अ सिस्टम वी कैन मेक देम हैपन. ठीक है. कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. इसमें करते हम क्या है कि एक रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सटर्नल असिस्टेंस एज इन सराउंडिंग के असिस्टेंस से हम करा देते हैं. इसमें सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज जो होता है वो सिस्टम के एंट्रोपी चेंज के जैसे सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज किया बाय 5 यूनिट्स, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी जो है वो मोर देन 5 यूनिट्स इंक्रीज करना पड़ता है हमको
मे बी 10 यूनिट्स और 12 यूनिट्स, और दोनों का सम जो होता है फिर पॉजिटिव हो जाता है, एंड इट देन हैपेंस कि द इंटायर प्रोसेस बिकम्स अगेन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मुझे कोई प्रोसेस करना है जो कि अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो व्हाट विल आई हैव टू डू? I'll have to create an entropy change in surrounding which is much greater than the decrease which is happening in system. So system में अगर entropy decrease 8 यूनिट या 5 यूनिट हो रहा है, तो surrounding में increase मुझे जो करना होगा that should be 10 यूनिट और 12 यूनिट्स, such that the net change of entropy in universe remains positive. और वो अगर remains positive हो गया तो फिर हमारा ओवरऑल प्रोसेस जो होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट यूनिवर्स लेवल। ठीक है, दैट्स नॉट अलाउड, इट डिक्रीजेस एट यूनिवर्स लेवल। इसको बेटर हम लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड ये होता है स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो पे द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। किसी भी प्रोसेस जिसके लिए यूनिवर्स जिसके लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निगेटिव रहता है, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, आद्या मैं खाना खा रही हूँ। क्या हो गया? भूख लगी है। नहीं मामा, मैं मॉर्निंग में पॉटी गई थी। भूख लगी भी, आओ देख लो तो मामा से। एक बाइट लो मामा। ओके ना, आप अपना खाना खा लो, आप फिर अरे ले लो ना मम्मा से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ। नहीं मम्मा, आप खा लो फिर मुझे खिलाते हैं। काम करिए।
delta S here it has to be noted that for a reversible process, delta S universe is going to be 0. Delta S system and delta S surrounding may not be equal to 0 individually. ठीक है? For a reversible process, delta S unit will be 0, whereas delta S system and delta S system is not equal to 0, and delta S surrounding is also not equal to 0. Not equal to 0, delta S surrounding not equal to 0. ठीक है? That's the general statements of second law of thermodynamics. जिसमें ये बोलते हैं हम कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है स्पॉन्टेनियसली खुद से हो रहा है तो उसमें हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज ही करेगी. अगर रिवर्सिबल हो रहा है, रिवर्सिबली हो रहा है प्रोसेस, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है, आने लायक कंडीशंस हैं, तो रिवर्सिबिलिटी होगी तभी इक्विलिब्रियम में आएगा. तो for those systems the delta S of universe is going to be equal to 0. तो reversible processes के लिए delta S universe जो होगा वो 0 रहेगा. बाकी के spontaneous processes के लिए delta S universe is always going to be positive. अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव होता है, दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है? इज दिस थिंग ओके? Yes, sir. ओके. आप जरा खाने के पहले मम्मा क्या बोल रही है आपको चेक करने के लिए मम्मा है बहुत हेल्प और शेक करने में आना सुना मतलब ये है इसमें है. Thus we can state simply that entropy has natural tendency to increase because response movement of a system from condition of from, from condition of low
probability to R ये नोट कर लो I'll it has been observed that increase in molecular disorder during evaporation evaporation is nearly merely same for all liquids. Substance of similar molecular structure has nearly same absolute entropy under similar conditions. यहाँ पर एक सब पॉइंट और भी है hard rigid crystals, solids having hard rigid crystals with light atoms are lowest
intro solids. See, hard rigid से ये इंश्योर होता है कि there will be least vibrations. ठीक है, रोटेशन और ट्रांसलेशन तो इजी रहेगा, वाइब्रेशन भी कम हो जाएगा अगर हार्ड रिजिड रहा तो, और अगर वाइब्रेशन हो भी रहा है तो लाइट एटम होने की वजह से the frequency of vibration is going to be smaller. ठीक है, so that will ensure lowest entropy or lowest level of disorderness, that means lowest entropy. ठीक है, among all the solids generally have lower entropy compared to gases and liquids. ठीक है, और solids में भी the solid which has lighter atoms and hard rigid crystals are the one which has smallest entropy, in smallest absolute entropy. Okay. There is one more similar kind of observation. It is like the absolute entropy of all monoatomic gas are nearly under similar conditions and tend to increase with increasing atomic weight. That means helium, neon, argon, krypton, xenon, they are going to follow this order. However, their entropy, absolute entropy at any given temperature and pressure will almost be in same range. यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हार्डली थोड़ा सा वेरिएशन होएगा एंट्रोपी का. ठीक है, इज दैट ओके? हाँ बोलो ना. इसके पहले वाले पॉइंट में हम सब लाइट आइटम्स वाला समझा रहे थे, फिर वो वाला पॉइंट देखो, अगर सॉलिड है तो उसके एटम्स जो होंगे या मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे. ठीक है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी their position is going to be fixed and hence they won't have any translational motion or rotational motion. No translational, no rotational motion. The only motion which is possible is vibrational motion. ठीक है, तो अभी इसमें होता क्या है कि चूंकि वाइब्रेशनल सिर्फ रहता है, उसमें भी अगर लाइट एटम्स हो गया, मास कम हो गया एटम्स का, जनरली लाइट एटम्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम रहती है. ठीक है, the frequency is going to be smaller for lighter atoms and therefore they are going to have lesser
फ्रीक्वेंसी अगर कम रहेगा तो फिर दे आर गोइंग टू हैव lesser possible arrangements and hence lower entropy, lower absolute entropy. सर नोट करना था ऊपर का। हाँ तो करो। कहाँ का नोट करना है, क्या नोट करना है? हाँ चलो फर्स्ट पॉइंट। Next thing in this regard is the two statements or two other statements of second law of thermodynamics. ठीक है? The first statement is second law of thermodynamics is further interpreted आई थिंक तुमको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए बेटा। following रेस्ट मतलब आईज क्लोज करके सोना चाहिए। statements The the first statement in this regard is मम्मा ने क्या बोला है आपको? सेल्फ रिपेयर होता है जब हम स्लीप करते हैं। Kelvin's statement of second law. This statement says that it is impossible to convert the entire heat from a single source into work without any other effect during or in any process. सर एनी अदर इफेक्ट मतलब कौन? एक सेकंड in any process. हाँ without any other effect का मतलब है without making any other change. So whatever heat is coming from a source, there is a supply, I mean there is a system जिसमें कहीं से तो किसी एक सिंगल सोर्स से हीट आ रहा है, ठीक है?
H अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर सिस्टम को सप्लाई की गई तो ये सिस्टम उस पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है. W is never going to be equal to H और W is always going to be less than H, the mod values. ठीक है, ये इन आ रहा है तो इन आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन W आउट जा रहा है तो आउट जा रहा है तो निगेटिव रहेगा. केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो, और अगर फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये इन आ रहा है और ये आउट जा रहा है. आउट वर्क जो है वो क्या है, पॉजिटिव है. इन वर्क इन आएगा तो निगेटिव रहेगा, वर्क आउट जा रहा है तो पॉजिटिव है. हमारे लिए केमिस्ट्री के लिए वर्क आउट जा रहा है तो निगेटिव वर्क है, राइट. हेलो. Yes. So better we put modulus so that comparison should be apple to apple. तो फिजिक्स के लिए हो या केमिस्ट्री के लिए हो, इसलिए उस पे मॉड लगा देते हैं. So mod W is always going to be less than mod H और mod W is never going to be equal to mod H. Is that okay? इसका मतलब हुआ कि जितना H आया उसमें से एक पोर्शन जो है वही W में कन्वर्ट होएगा और बाकी जो होगा वो या तो अनयूटिलाइज्ड फॉर्म में या किसी और दूसरे फॉर्म में रिलीज हो जाएगा सिस्टम से. Is that okay? That is what it means by without any other effect. So the effects, the other side effects, basically any other effect का मतलब कोई side effect. तो side effects क्या हो सकते हैं? Side effects could be यहाँ से ये किसी और form of energy में dissipate हो जाए, sound, light, whatever, या फिर rejected heat इसको बोलते हैं. ठीक है, ये coming heat या heat coming from source or heat supplied, this is called rejected heat and this is called work done. ठीक है, so कोई भी heat अगर आ रहा है तो there is going to be some work done which will be a fraction of whatever heat you are supplying and then there is always going to be some rejected heat. ठीक है, that means it is impossible to convert entire heat from a single source into work without any other effect. Is that okay? हेलो. Yes. हाँ, ये बात समझ में आई हम लोगों के? हाँ. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट जो होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा जो स्टेटमेंट है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, वो है क्लॉजियस स्टेटमेंट of second law. Now clauses statement में what we have is it is impossible to design slash construct a device that operates in a cyclic process
produces no other effect than transfer of heat from a cooler body to a hotter body. अच्छा आप पीएचडी करते हो? ठीक है, so basically ये इसका मतलब ये होता है it is impossible to design a device that operates in a cyclic process and produces no other effect than transfer of heat from a cooler body to hotter body. यहाँ पर no other effect जो है ना, that is primarily to highlight that without any other external assistance और spontaneously कोई भी चीज lower temperature से higher temperature पर, मतलब you cannot have a device which can transfer heat from lower temperature body to higher temperature body spontaneously. ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग that is spontaneous heat transfer from spontaneous heat transfer from low temperature to high temperature body. Is that okay? Yes. Okay. हेलो, अच्छा हो रहा है? हाँ बोलिए। मम्मा लोग ये है वो बैड वन।
सी इन दोनों में बेसिकली पहले वाले में ये पहला वाला जो केल्विन स्टेटमेंट है उसमें ये है कि यू कैन नॉट हैव अ device or instrument design which can convert entire heat being given to it in form of work. ठीक है, दूसरा क्लॉजिस स्टेटमेंट जो है वो ये स्टेट कर रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ मशीन विच कैन ट्रांसफर heat from lower temperature to higher temperature spontaneously. ठीक है, खुद से बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के यू कैन नॉट हैव अ मशीन विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम a cooler body to a hotter body, right? Is impossible. Impossible. ठीक है, so these are different statements through which the second law of thermodynamics has been defined or stated. ठीक है, and these are certain statements which has not to be found violated ever since they have been framed. ठीक है, empirical है still, we have never been designed anything, we have never been able to design anything which can violate these principles. So that's how they are there till date. अब इनको यूज करके या इनके थ्रू देयर वाज अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड कार्नॉट. ठीक है, who has defined certain things related to heat engine. So we are going to study that heat engine thing. Heat engine क्या होता है? That's a device which converts heat to work. ठीक है, takes heat from one source and it converts that into useful work. That's called heat engine. So steam engine is an example of heat engine. You have petrol engines, they are another example of, yeah, diesel engines, internal combustion engines, external combustion engines. They are an important example of heat engine. Apart from that, there are many other heat engines. So for any heat engine, Carnot has given certain laws. So we are going to discuss them. उससे basically there is something called as efficiency of engines which is defined or decided. I mean उससे फिर ये पता चलता है कि Carnot engine किसी भी गिवन स्टेट्स में अगर कोई इंजन ऑपरेट कर रहा है तो उस स्टेट में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल है दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ कार्नोट इंजन एंड एनी अदर इंजन इज गोइंग टू हैव लोअर एफिशिएंसी देन कार्नोट इंजन. यानी बेसिकली कार्नोट इंजन्स आर समथिंग व्हिच आर आइडियल थिंग और किसी भी given condition में they are the one which are going to have highest efficiency. No process or no machine can have greater efficiency than those engines. ठीक है, कार्नोट इंजन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम और ये अगेन कॉमन है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही हम लोग को पढ़ना है. केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड फॉर्मेट में उसको पढ़ना है. फिजिक्स में वी हैव मोर क्वेश्चंस ऑन देम जिसको कि हमको सॉल्व करना होता है. ठीक है, बट केमिस्ट्री में भी इक्वल लेवल की चीजें आ सकती हैं, आपको कभी कभार आती भी है. सो इस पूरे डोमेन में द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर क्वाइट ओवरलैपिंग. कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सिर्फ है जो कि एक्सक्लूसिवली फिजिक्स में पूछे जाते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव वैरायटीज हैं जो कि केमिस्ट्री में, मतलब वो एक्सक्लूसिव वैरायटीज अभी तक केमिस्ट्री वाले डिस्कस नहीं किए हैं. दे आर गोइंग टू कम once I have already discussed free energy which is going to come after this concept. ठीक है, तो free energy discussion के बाद when I'll be starting discussing thermochemistry, that's the unique portion or unique thing which is going to happen only in case of chemistry. या उससे उस पर based
क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री में अभी तक की जो चीज है उसके ऊपर दोनों ही तरफ इक्वल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस आते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ओके, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, नहीं आवाज क्लियर आई, फिर से बोलो ना, आवाज कट रही थी हर्षित। सर ये वाला स्टेटमेंट क्लॉसेस वाला वापस एक बार समझा दो ना प्लीज। देखिए क्लॉसेस वाला स्टेटमेंट ये है कि यू कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, मतलब देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइस और यू कैन नॉट डिजाइन अ डिवाइस which can spontaneously transfer heat from a cooler body to a hotter body. ठीक है, that's the simple statement. हेलो Spontaneous, हेलो, हाँ बोलिए ना। सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि द स्पॉन्टेनियस हीट ट्रांसफर और स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी to a hotter body is a impossible task. You cannot have a machine or you can never design a machine which can transfer heat from cooler body to a hotter body spontaneously without creating any other effect or without having any other effect. ठीक है, we cannot have spontaneous transfer of heat from cooler body to hotter body. That's the clause's statement. यहाँ पर नो अदर इफेक्ट जो होता है ना वो प्राइमरली एक्सटर्नल असिस्टेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट यही बोल रहा हूँ क्या क्या कि डिजाइन जैसा मतलब कि डिवाइस नहीं बना सकते कि स्पॉन्टेनियस हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बॉडी में। हाँ यही यही चीज तो यहाँ पर लिखा है ना, यू कैन नॉट हैव अ डिवाइस which can spontaneously transfer heat from low temperature body to high temperature body.
So R is not क्या क्या cannot so R a device which convert heat unorganized form of energy into unorganized into work organized form of energy. अच्छा यहाँ पे कार्नोट या CARNOT a heat engine that works reversibly and has maximum efficiency या maximum operational efficiency including that works reversibly and has maximum operational efficiency compared to any other heat engine operating with इन शॉर्ट क्या हो गया कुल मिला जुला करके बात आपको सर हेलो सर आप बोल रहे थे मैं डिस्कनेक्ट हो गया नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था अभी बोलने जा रहा हूँ सो इन शॉर्ट क्या है कि कार्नोट इंजन जो है दैट इज अ हीट इंजन हैविंग मैक्सिमम ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑपरेटिंग अंडर अ गिवन कंडीशन ठीक है और बाकी जो भी हीट इंजन्स होंगे दैट कैन हैव either equal to or lesser efficiency than these Carnot engines operating between the same conditions ठीक है कंडीशन 1 कंडीशन 2 के बीच में अगर एक इंजन 25% दूसरा 30% तीसरा 40% इफिशियंसी जनरेट कर रहा है तो अब इन तीनों में मैक्सिमम 40% है कार्नोट इंजन जो होगा वो या तो 40% या फिर 40% से थोड़ा और ज्यादा इफिशियंसी वाला इंजन होएगा ठीक है सच दैट बाकी सारे इंजन जो होंगे उसकी ऑपरेशनल इफिशियंसी उस कार्नोट इंजन से कम होएगी सो बेसिकली कार्नोट इंजन क्या है कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन This Carnot engine is an ideal engine
It works reversibly. And obviously has maximum reversibly and has, चूंकि रिवर्सिबली वर्क करता है इसीलिए हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी. अच्छा, किसी भी इंजन के लिए हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन द एफिशिएंसी? ठीक है, एफिशिएंसी ओके, दिस इज द रेशियो एंड एफिशिएंसी. अब दूसरी चीज परसेंटेज एफिशिएंसी भी होती है, ये रेशियो बता रहा है. परसेंटेज एफिशिएंसी जो रहती है दैट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय 100. अरे रिकनेक्टिंग में चलेगा. उसको कॉल करूं क्या मैं? किए हुआ इसको कॉल. अरे किए तो अभी तो किए थे थोड़ी देर पहले. क्या बोला फिर? कुछ बोला नहीं, बोलता है कि थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए. दो फोन में दो फिर से करता है. आदू फोन लेके आओ बेटा तुम. इधर. और तुमको सोना नहीं है अभी? चलो फोन बंद करके थोड़ी देर सो जाओ इधर आके मम्मा के लेग पे. हाँ बेटा, बहुत सारा खेलना है अभी शाम को हम लोगों को. क्या? बहुत सारा खेलना है. क्यों? क्या क्यों? मैं नहीं कर रहा. सो जाओ इसलिए तो बोल रही हूँ. पापा ना टमी करना ना. हेलो. हाँ भैया, मैं F504 से बोल रही हूँ, सेठिया ग्रीन व्यू से. F504 अमित जी की बात हुई रहेगी. हाँ भैया, ये एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भैया. सिग्नल आता जाता रहता है, बीच में कॉल चलता रहता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑफिस का. हाँ प्लीज, हाँ प्लीज भेज दीजिए. मैं कल भी उनको बोला था, वो लेने आए थे पैसा तो.